Dear students of class 12th, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you. Dear students, आज हम exercise 5.1 continuity and differentiability question number 23 करेंगे. So dear students, question number 3 is find all the points of discontinuity of f where fx is defined as sin x by x if x is less than 0, fx is equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 0. So dear students, here the only point of doubtfulness is that x is less than 0 and x is greater than or equal to 0, that is x is equal to 0. So we will check the continuity at x is equal to 0. So we will check continuity at x is equal to 0. We will check this continuity at x is equal to 0. So dear students, we will take left hand limit, that is L left hand limit, limit x approaches to 0. क्योंकि हम x पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो x की नेबरहुड में हम चेक करेंगे, दैट इज x माइनस नेबरहुड इसके लेफ्ट साइड में fx. So dear students, now fx where it is less than 0, so it will be sin x limit x approach to 0 minus तो फंक्शन हम ये सिलेक्ट करेंगे sin x डिवाइड बाय x, बिकॉज यहाँ हम x की जो नेबरहुड हम देख रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट से देख रहे हैं 0 और यहाँ से राइट, तो यहाँ पर हम देंगे 0 माइनस और यहाँ से हम देंगे 0 प्लस. द पॉइंट इज अप्रोचिंग क्लोजली टू 0 from left side and approaching closely to 0 from right. So this we write left hand limit 0 minus and this we write as 0 plus. This is known as the neighborhood of 0, neighborhood of 0. So this is limit at x approach to 0 minus sin x divided by x. And now we will take limit at approach to 0 and x is x. We will put x as 0 minus h, that is sin 0 minus h, 0 minus h डिवाइड बाय x. तो x भी हमने पुट किया 0 माइनस h as h approaches to 0, as h approaches to 0 divided by 0 minus h. Dear students, it is equal to limit h approaches to 0, it is sin of minus h divided by 0 minus h, it is minus h, or it will be equal to limit limit यहाँ पर हम माइनस साइन एच, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन एच डिवाइड बाय दिस माइनस एच माइनस और माइनस विल कैंसल, यहाँ एच अप्रोच टू 0. So dear students, we will get here limit h approaches to 0, this is sin h divided by h. So dear students, as you know that limit theta approach to 0, theta approaches to 0 sin theta divided by theta, as theta approaches to 0 sin theta by limit approach theta approach to 0 sin theta divided by theta is equal to 1. तो ये एक formula limit sin theta divided by theta as theta approach to 0 is equal to 1. So here we use this formula, that is limit sin h divided by h as h approach to 0, it is equal to 1. It is equal to 1. This is equal to 1. So left hand limit is equal to 1. Left hand limit is equal to 1. Now we will see what right hand limit becomes. Right hand limit, that is limit x approaches to 0 plus neighborhood देख रहे हैं तो fx now limit x approach to 0 plus
एफ एक्स, तो फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पर लेस देन जीरो, तो ये नहीं हम सेलेक्ट करेंगे। एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो हम जीरो प्लस राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो, तो इट इज एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज एक्स प्लस फंक्शन विल बी एक्स प्लस 1. नाउ वी विल पुट एक्स इक्वल टू एच प्लस 1, 0 प्लस एच, दैट इज लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, दैट इज यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक्स के पहले 0 प्लस एच और प्लस दिस वन. Now taking limit here, we will get limit. अगर यहाँ हम लिमिट लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 0 प्लस 0, 0 प्लस एच की जगह हम 0 लेंगे तो प्लस दिस वन, सो इट विल बी इक्वल टू 1. सो राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1. सो here left hand limit is equal to right hand limit. Also अगर हम यहाँ पर f0 भी निकालेंगे, क्योंकि it is x is equal to 0, अगर हम यहाँ पर f0 भी निकालेंगे, f0 that will be 0. अगर हम यहाँ f(x) that is x plus 1, because x is equal to 0, तो f0 हम निकालेंगे 0 plus 1, so the f0 is also equal to 1. So we see a right hand limit is, left hand limit is equal to 1, right hand limit is equal to 1. The value of the function f0 is equal to 1. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to what is f0 के बराबर भी है ये. So f is continuous, function is continuous at x is equal to 0. So there is no point of discontinuity in this function. So function is continuous at x is equal to 0. This was question number 23. Now question number 24 is determine if f is defined by fx x square, fx is equal to x square sin 1 by x if x is equal to 0, fx is equal to 0 if x is equal to 0, is a continuous function. तो आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है if f is defined by this function fx is equal to x square sin 1 by x if x is not equal to 0, is equal to 0 if x is equal to 0, is a continuous function. तो हमें ये देखना है ये क्या ये continuous function है. So here doubtful point is that x is equal to, x is not equal to 0 and x is equal to 0. So we will check continuity. Continuity at x is equal to 0 and x is equal to 0. तो x is equal to 0 इस point पर हम continuity, the only point of doubtfulness is that x is equal to 0, तो इस पर हम continuity check करेंगे. So we will take left hand limit, that is limit x approach to 0 minus, तो 0 के neighborhood में हम check करेंगे 0 minus fx. Now limit x approaches to 0 minus fx, तो यहाँ पर x यहाँ equal to 0 है तो ये फंक्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. x is not equal to 0, so here is the chance x is that is x is from left side, that is sin x square. यहाँ पर हम देंगे x square sin 1 by x. So यहाँ पर हमने लिमिट लिया, लिमिट x approach to 0 minus from left. So we will take here limit x or with h approach to 0, h approaches to 0, और यहाँ x की जगह हम क्या लेंगे, x की जगह हम लेंगे 0 minus h, as h approaches to 0 and x approaches to 0, x approaches to 0 minus. So we will take here 0 minus h square sin 1 by h, 0 minus h. तो 0 की जगह हम क्या ले रहे हैं, x की जगह हम ले रहे हैं 0 minus h, तो यहाँ 0 minus h स्क्वायर, बिकॉज यहाँ x स्क्वायर है तो 0 minus h स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पर x 0 पर हम चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ लिमिट लेंगे 0 minus h. अगर यहाँ 1 होगा तो 0 minus 1, अगर यहाँ 2 होगा x 2 पर करेंगे चेक तो हम लेंगे 0 minus 2 when x is approaching from. Now dear friends, it is limit h approach to 0
और यहाँ पर 0 माइनस एच स्क्वायर, इट इज 0 माइनस एच, इट इज एच स्क्वायर साइन 1 बाय माइनस एच, और इट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस एच, क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो यहाँ माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच. Now taking limit, it will be equal to, left hand limit will be equal to, when h is equal to 0, so it will be minus 0 square into, और sin 1 by x, तो ये बनेगा क्या 1 by x, so it will be a number, oscillating number between -1 and 1, so it is an oscillating number, 0 into an oscillating number. When we will take sin 1 by x, h approach to 0, so it will become an oscillating number between -1 and 1. So it is equal to 0 into something, it will be equal to 0. So left hand limit is equal to 0. Now we will take right hand limit. That is limit, right limit h x approach to 0 plus f x, and it will be equal to limit x approach to 0 f x. तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 0, यहाँ 0 प्लस है, तो यहाँ 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ हम यही फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज here are chances of this x is not equal to, it will maybe x greater than 0. so यहाँ पर हम लेंगे x स्क्वायर साइन 1 by x, फंक्शन ये लेंगे हम. so यहाँ पर लिमिट h approach to 0 as x is equal to 0 plus h लेंगे हम as h approaches to 0 and x approach to 0 plus. सो यहाँ पर क्या लेंगे हम 0 प्लस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच, सो इट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, 0 प्लस एच, इट विल बी एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच. सो इट इज अगेन इक्वल टू लिमिट जब हम लेंगे, सो इट विल बी 0 इंटू दिस ओसिलेटिंग नंबर, ये भी ओसिलेटिंग नंबर होगा, ओसिलेटिंग नंबर between -1 and 1. so 0 into this number will be equal to 0. so यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू 0. सो अगर हम x इज इक्वल टू 0 f 0 लेंगे तो वो भी 0 होगा. सो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, और f 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0. सो ऑल दीज आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, और f वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f0. so f is continuous, the function is continuous at x is equal to 0. so f is continuous at x is equal to 0. तो ये हमें दिखाना था क्या ये continuous थी at x is equal to 0. so this was question number 24. now today is enough. Rest will be in the next video. Khuda Hafiz.